Hello guys, Aishra Katyal welcome you all to today's talk. We are at Marva Studios and we have our second global fashion and design week going on. And with us we have very pretty Miss Teen Tiara Srishti Kaur. So let's talk to her and know about her journey. Hi. So first of all just begin with your journey. Like हर लड़की का एक ड्रीम होता है कि मुझे ब्यूटी क्वीन बनना है, मुझे अपना नाम करना है. तो क्या ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ था? मैं कभी कुछ डिसाइड करके चलती नहीं हूँ और टीन यूनिवर्स की जर्नी मेरे लिए एकदम नई थी और मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने आप को किसी चीज़ में स्टीरियोटाइप ना करिए. जो भी आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ज़रूर करिए क्योंकि वही आपको आगे बढ़ाएगा. So go with the flow is the mantra, right? So just tell me that आपने वैसे मतलब how did you begin it? Like what were to pursue anything? We have to take a formal training. We have to go into something. So how was it for you? Well, when I decided to go for the pageant, I took help from Femina Miss India's team. Melvin was my mentor, Melvin Dominic Norona. So he basically designs national costume for all the Miss Indias that we have. And not only him, even Rita Gangwani ma'am, she was here today. So yeah, even her, she was my mentor for the pageant. And काफ़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन अब वो pageant में नहीं, वो तो हर एक चीज़ को पाने के लिए करनी ही पड़ती है. There's no substitute to hard work, right? अच्छा मुझे ये बताइए कि जब आपने अपनी ये journey begin करी and when you were competing for it, how was the experience? What were those happy moments, highs and lows? I want you to share those with me. जब मैं इस पैजेंट के लिए गई थी, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट एक एक्सपीरियंस के लिए गई थी क्योंकि ये मेरे लिए एकदम नया था और मुझे लगा नहीं था कि मैं क्राउन ला पाऊँगी क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंट था, बट तब भी एक होता है, आपको एक डर भी होता है, नर्वसनेस एज अ ह्यूमन नेचर. आप नर्वस होते हैं, आप खुश होते हैं, मिक्सड ऑफ इमोशंस होते हैं. तो जब मैं गई थी वहाँ पर तो ये सोच के नहीं गई थी कि मैं सिर्फ जीतने जा रही हूँ या मुझे सिर्फ क्राउन चाहिए. मैं एक एक्सपीरियंस के लिए गई थी, लेकिन एक जो मैंने हार्ड वर्क किया था उसी के ज़रिए मैं क्राउन लेकर आ पाई अपनी कंट्री के लिए. मुझे लगता है शायद ऐसे माइंडसेट से आप गए थे इसीलिए आप जीत पाए बिकॉज एक्सपेक्टेशंस दे किल जॉय, राइट? ओके, सो टुडे यू आर हियर फॉर द फैशन डिज़ाइन वीक. सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? हाउ डिड you find the event today? Well, it was wonderful, to be very honest, as a fashion student from London College of Fashion. You know, when you're judged by people that are like, amazing in their jobs. For example, I was judged by Jimmy Choo, Donatella Versace. So, it's like something that is wonderful, and you feel out of the world when you meet such people. And today when I saw the fashion show, it was wonderful to see such young talents coming up in our country, and I really want to wish them all the very best, and I hope that maybe next time even I'll work with one of them. Indeed, we expect the same and we wish you a very good luck for your coming future. Thanks for sharing your views and coming to the studio. So, magic happens to only those who believe in the beauty of their dreams. This was all about dreams. This was all about success. This was all about glamour and hard work, of course. This was Srishti Kaur, Miss Teen Tiara. Aishra Katyal sign off for the day, but I'll be back with another very eminent celebrity guest for you. Till then, you keep watching MSTV Har Pal Aapke Saath.